ये जो सारी चीजें हम छोटी छोटी सीखते हैं बुकलेट से, मैंने देखा है, तो मुझे वो दूसरे कॉर्पोरेट्स कंपनी या फिर दूसरे मैनेजमेंट या कंपनी से काफी अलग लगते हैं। और बुकलेट में ऐसा कभी नहीं होता है कि हम एक दूसरे को कभी आगे रखे हुए या पीछे रखे हुए, या फिर उसको पीछे रखना है, मेरे को आगे बढ़ना है, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। तो ये कैसा होता है, किस तरह से मैनेज, मतलब कैसा मैनेज करते हैं? Yeah, I think it's $1 million question. See, growth comes from learning, and it is impossible to learn without mistakes. मैं मिस्टेक्स करता हूँ, तुम भी करते हो, हमारा हक है मिस्टेक करना, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न विदाउट मिस्टेक्स। तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी तुम कोई गलती करते हो, हम जब बुकलेट के काम एक साथ करते हैं, तो आई डोंट अपफ्रंट क्रिटिसाइज यू। जो टिपिकल बॉस लीडरशिप जो होता है एज अगेंस्ट सर्वेंट लीडरशिप, तो बॉस लीडर क्या करता है, अरे पागल इतना नहीं समझते कि, सो फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने तुझे कुछ नंबर क्रंचिंग करने को बोला था एक्सेल शीट में, सो डिड नॉट लिंक द सेल्स। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सेल इज इफ यू लिंक दो सेल्स, तो एक ही अगर सेल चेंज करेंगे तो बाकी सब कैलकुलेशंस अपने आप चेंज हो जाते हैं, तुमने वो सब मैन्युअली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके नंबर्स डाले थे। So when I realized this mistake, as a boss leader, I should have shouted at you, अरे पागल इतनी अक्ल नहीं है तुमको, फिर एक्सेल पे क्यों काम कर रहे हो, कैल्सी पे काम करने का, वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करने का। But then I took a pause, and you know what? Most of the mistakes that our subordinates commit were committed by me once in the past. To think this requires lot of humility. हर एक गलती जो तुमने की है पिछले 5 साल में, वो हर एक गलती मैंने खुद की थी तुमसे पहले, एट सम पॉइंट और द अदर। जब ये ख्याल मन में आता है तो मेरा रेस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो फिर उस वक्त मैंने क्या किया था, क्या मैंने खुद को गाली दी थी? खुद को तो गाली देते नहीं हम ना, वी जज अदर्स बाय देयर एक्शंस एंड वी जज आवरसेल्व्स बाय आवर इंटेंशंस। इट्स सो फनी। अगर दूसरे ने कुछ गलती से भी गाली दी तो वो नालायक, ही डजंट लव मी, ही हेट्स मी। और अगर हम कुछ बोले, अरे मुझे तुम्हें दिल दुखाने का इंटेंशन नहीं था यार, दिल में मेरा तेरे लिए प्यार है। सो वी टॉक अबाउट इंटेंशंस व्हेन इट कम्स टू अस एंड ओनली एक्शंस व्हेन इट कम्स टू अदर्स। एंड देन यू रिमेंबर, नो आई गेव यू द सॉल्यूशन, आई सेड दैट वॉच दिस ट्यूटोरियल वीडियो ऑन एक्सेल, and that too after a couple of days, so that you don't even come to know that it is a criticism, that it is a negative feedback, right? So this is what we have to do. हाँ, इवन तुमको अगर पता है कि कुछ साल पहले हमारे घर पे यमुना जी काम कर रहे थे जो बर्तन साफ करने के लिए वगैरह, तो मैंने देखा कि बर्तन उसके साफ नहीं हो रहे, वो जो डिटर्जेंट पाउडर का लेयर रहता था काफी उसपे, तो आई वॉज गेटिंग अनॉयड कि ये काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो इमीडिएट बॉस लीडरशिप क्या होगा कि शी इज लेजी, वो कामचोर है, ऐसा लेबल लगा दी। But again I took a pause and I observed that only my milk mug, which is quite tall and deep, उसी के बॉटम के नीचे वो पाउडर रहता था। And then I realized she was stout, तो उसके हाथ मोटे थे तो उसका हाथ अंदर नहीं जाता, whereas all other dishes were quite clean. So it was my job to get the cleaner for her, which will go at the bottom of the bottle or the mug and clean it. So see, taking a pause is, I think, a miraculous thing that one can do. Between stimulus and response, there is a space. In that space, there is a pause button. In that pause button lies your freedom to choose your response. And in your response lies almost everything. Your happiness, your sorrow, your grief, your growth, your failure, your success, your relationships, everything. Big thing. Now, both the responses that I mentioned with for you and Yamuna Bai would have been disastrous if there was no pause taken, right? Exactly. So, do you think कुछ बड़ी बात है? Of course, it takes a lot of practice. We are by nature spontaneous, impulsive people.
राइट? तो आपने देखा जो महात्मा लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, सो काम, दे टॉक सो स्लोली, दे टेक पॉजेस. या जग्गी वासुदेव, if you have watched his videos, Sadhguru Jaggi Vasudev, he never speaks fast, he always takes time, to give his answers. तो this is I think करना है. और thanks to a book called विक्टर फ्रैंकल ने बुक लिखी थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग. उसमें मुझे ये पता चला कि टेकिंग अ पॉज इज सो इम्पोर्टेंट.